Let's bring in India Today's Kamaljit Sandhu, who's been tracking the fallout of this very unsettling incident in Delhi. Kamal, big first action by the Delhi police. Many arrests have been taken so far, but big first action against the organizers. They've booked the VHP and the Bajrang Dal. They've arrested one member we hear called Prem Sharma of the VHP. Tell us more, Kamal. Well, 48 hours after the first communal clash, there has been a crackdown by Delhi police, and as told and as you were talking about, this is Prem Sharma, who's the Zilla Seva Pramukh of the Vishwa Hindu Parishad, who's now been arrested. This is an FIR 44/22 on the 17th. This is for Jahangirpuri and organizing this particular procession. And remember, we've been told by the locals that the procession took place thrice. The earlier ones had permission, but the evening one did not. And this is where we've seen a massive blame game come in from both the communities. One group blaming the other one for instigating, and what turned into a communal clash. This is where several arrests have been made, at least 23 of them. And with this addition, there will be 24 arrests, which have been now made in total. Two of them are juveniles. Clearly, the pressure very much on Delhi police as well. Questions being arising now as to why there wasn't stringent action which was taken, especially in the wake of Khargon and Karoli, where tensions had been building up in other places. We've also seen several community leaders now come out and speak and saying that there should not be one-sided action by Delhi police. So yes, a huge question mark also coming in. But Delhi police saying they will go after culprits, whether they're from majority or the minority community. Anybody who's behind this action would be taken to task. There will be a case and obviously arrest taking place. But yes, what we know is there's a crackdown by Delhi police. Now where we are, we'll just try and give you a sense of 365 degrees as to what is really happening. Barricading being done, a lot of people are being restricted now, not being allowed to move. There is obviously a lot of media presence also there. But Delhi police here, you will see the body language at this point of time is relaxed. This means that the tensions are abating. But as you know, Shiv, early this afternoon, there was a small flare-up when Delhi Crime Branch went in to catch hold of the family of the accused, and that is where a small stone-pelting incident took place. So Delhi police being careful, they don't want any further flare-up of a situation, but the pressure also mounting as to whether it is via videos, whether it's the CCTV. So a whole lot of measures being put in place. But the question is that after 2 years in Northeast Delhi, when communal tensions happened, a lot of blame game to Delhi police. This is second time around, and this time in Northwest Delhi. Questions being arising. But remember, it is Rakis Astana who's at the helm of affairs, and he's promising strict action, saying irrespective of caste, community, communal issues, they will be cracking down as far as culprits are concerned. So they'll have to live up to the words. There, if you can, we'll try and show you. The tents have been put up, and that is where there have been community leaders coming in. There've been a talk about the Hanuman Jayanti committee, and that is where the elders have been roped in. There was examination which was taking place in a nearby school. There were parents who came with kids, some of them tense, but they were saying they generally appeal for calm and saying this area is not generally known to be communally tense. But again, somebody is definitely at fault because of the flare-up, and that is where they need what is called unbiased investigation, and saying the onus responsibility clearly lying on Delhi police. The Home Ministry swung into action. The Home Minister has spoken to CP Delhi. There is obviously the case which has been transferred to Crime Branch, and investigation is already underway. Kamal, the situation clearly is still very tense in that particular area, given that our cameras actually captured stone pelting that happened today as well. There was a flare-up today as well. So, all ground investigations that are happening are going to have to take place, like you rightly pointed out, in a very, very careful manner, because tempers are still extremely high, Kamal, where you are. Well,
things can be very volatile. They seem calm at this point of time, but remember, at this point of time, both the communities wanting action to be taken place. They want this responsibility to be fixed. Now, there was stone pelting incident which has taken place. We've been told there's Jamaat-e-Islami Hind which came to the fore. They said they will be speaking to the Union Home Minister. This is not a one-off incident. There have been several incidents across not just one state, but several of the states. They want that sort of an action to take place. On the other hand, Delhi police has now swung into action. They have booked the VHP and the Bajrang Dal. So what people now really want is that things should come to a normal, things should go back to normal. But perhaps it will not be the case if investigations is not done in the right way. This is where responsibility coming on to Delhi police and the crime branch. Now, if we can try and show you, just see the number of barricades which have come up. There is this cyber cell vehicle which is standing here. See a lot of media also present here. So clearly they want to see that as far as misinformation, that is not spread through social media. And this is where we'll see the cyber crime cell, which is also here. They've been investigating, going into the gullies. This is a huge task because this is a very congested area. If you can just pan around, and the camera person Sanjeev will show you the area, very congested area, and this is where the crime branch going in, carefully scanning. Now, out of the 23, at least 8 of them are history sheeters, and this is where they have cracked down on all those people who are known lumpen elements. But clearly, one point is of investigation, whether this was a planned conspiracy, as several of the BJP netas are pointing out. Was it spur of the moment, which was just then and there, and thereafter, where did the stones and the swords really come in from? All these are questions which now need to be answered. All this will come out in investigation. But as the Lok Sabha MP from the area, Hansraj Hans, told India Today, no community can be blamed. This is a matter of investigation now as to who is behind this. And if there are those people who are at fault from both the sides, they will be booked, they will be arrested and action taken against. Kamal, thanks very much. Big action taken finally under pressure by the Delhi police. They have booked the VHP and the Bajrang Dal for organizing the Shobha Yatra without permission. One person from the VHP has already been arrested, and things are extremely volatile, as Kamal just pointed out. In fact, India Today's Anjana Om Kashyap, who was on the ground just a few hours ago in Jahangirpuri, happened to see this firsthand, as you're about to see. Her camera captured a fresh eruption of stone pelting when the police arrived there to question the family of the man accused of firing a shot during the violence. Take a look at this dramatic sequence. यहाँ पर ये वाली कॉलोनी है जहाँ पर बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच एक महिला को ले गई थी पूछताछ के लिए। उसके बाद ऊपर वाले घरों से देखिए, ये ऊपर वाले जो घर है यहाँ से पथराव की शुरुआत हो गई थी। ये देखिए नीचे, अगर दिखाइए अशोक, नीचे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर ये सारी पत्थरबाजी, यहाँ पर कुछ ही देर पहले पत्थरबाजी की गई है और ये बाद से यहाँ से तुरंत लोगों को हटना पड़ा, क्योंकि यहीं पर अभी भी आप देख रहे हैं मशक्कत कर रही है पुलिस। कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हमने भेजी हैं जब लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहां पर आ गई थी गेट पर, और यहीं पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है, उनको पीछे रोक रही है, समझा रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहां पर एक बार फिर से परिस्थिति थोड़ी बेकाबू हुई थी और फिर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। छतों पर खास तौर पर वो जो पीला और नीला वाला घर है वहां से 3-4 पत्थर आए थे और ये वाले घर के ऊपर से भी पत्थर, और लोग इस तरह से बालकनी के पीछे छिपकर, रेलिंग के पीछे छिपकर पत्थर फेंकते हैं कि उनको कैप्चर कर पाना मुश्किल हुआ। लेकिन आप कल्पना कीजिए, भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल की तैनाती है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। इस तरफ की तस्वीर दिखाइए, इस तरफ ये दिखाइए, ये रिजर्व्ड आर्म फोर्स किस तरह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि पत्थरबाजी हो गई है उसके बाद से अपना हेडगियर पहनकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मिनटों के अंदर जब यहाँ पर पुलिस उन्हें समझा रही थी कि जांच के लिए हम पूछताछ के लिए ले गए हैं, तभी ये पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई और इस तरह के ईंट ऊपर से फेंके जा रहे थे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हैं कुछ सीमेंट के भी टुकड़े हैं, जो ऊपर से फेंके जा रहे थे। अब आरएएफ को भी वहाँ पर बुला लिया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है, क्योंकि मामला महिलाओं का है। महिलाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल रच रही थी और आरएएफ को यहाँ पर बुलाकर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। आरएएफ की तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी, आरएएफ की देखिए महिलाएं अंदर घुसी हैं और अब उन घरों में जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नौबत ऐसी आ चुकी है और ये तो उस चौराहे से काफी दूर है, लगभग 100 मीटर दूर है जहां पर उस दिन हिंसा हुई थी। लेकिन जो साजिश करता अलग अलग गलियों में जहां
जहांगीरपुरी में घुसे हुए हैं, उनको पकड़ने की फिराक में जब क्राइम ब्रांच अपनी जांच कर रही है और लोगों को आगे ले जा रही है, तब इस तरह की नौबत यहाँ पर पहुंची है। और उसके बाद आरएएफ की तमाम महिलाओं को हेडगियर के साथ यहाँ पर बुलाया गया और वो फिर अंदर गई हैं और वो वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें समझाया जाए। दरअसल जांच में अगर किसी एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद लोग तनाव में आते हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अब लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी देर का इंतजार और है और उसके बाद आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है, एक बार जल्दी से अगर आपने यहाँ से भी तस्वीरें नजर आएंगी। अब तो यहाँ पर मीडिया का भारी हुजूम हो गया, उस वक्त जब हम आए थे तो नहीं था। ये देखिए ये घर है, यहीं पर ये ऐसे घर हैं और यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। मेन चौराहा दिखाइए, मेन चौराहा जहाँ पर उस दिन हिंसा हुई है वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से है। लेकिन यहाँ पर जब एक महिला से पूछताछ की जा रही थी, उस महिला से पूछताछ करने के लिए जब उसे यहाँ से ले जाया गया, उसके बाद महिलाओं का पूरा हुजूम बाहर सड़क तक निकलता है, पुलिस वालों पर हमला बोलता है। जब वो नहीं सुनते हैं उसके बाद ऊपर छतों से पत्थरबाजी होती है और उसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। रिजर्व आर्म फोर्सेस की तमाम ऐसी जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने हेडगियर लगाया है और अब वो इस कॉलोनी में अंदर गई हैं लोगों को समझाने के लिए और किसी तरह से शांत करने के लिए। जो आरएएफ की महिलाएं थी, दिखाइए जरा ऊपर से कैमरा दिखाइए, वो आरएएफ की महिलाएं जो थी वो बाहर निकल रही हैं, ये दिखाइए ऊपर से। उस गेट के पास से जो आरएएफ की महिलाएं थी वो लोगों से बातचीत करने के बाद अब बाहर निकल रही हैं। उन महिलाओं को समझाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी और अब ये लोग वहां से निकल रही हैं। आरएएफ की एक पूरी ह्यूमन चेन बना दी गई है, ये दिखाइए, ये महिलाएं निकल गई हैं और ये आरएएफ की एक पूरी टीम है जिसने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना लिया है। ये दिखाइए, ये ह्यूमन चेन है, ये ह्यूमन चेन इन्होंने यहाँ पर बना लिया है ताकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और मामले को ठंडे पड़ने दिया जाए ताकि कुछ देर तक यहाँ पर शांति बनी रहे। तो जितनी आरएएफ की महिलाएं थी जो अंदर गई थी समझाने के लिए और आरएएफ के ये पूरे ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है जो फिलहाल शांति के लिए यहाँ पर एक चेन बना रहे हैं ताकि पूरे इलाके में शांति की बहाली फिर से कर दी जाए।